Good morning, student. Welcome to my new subject, production process. I discuss different objective questions regarding milling, grinding in this video. जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए. Now we are going to start. Question number 1 is, which one of the following statement is correct? In up-milling operation, the undeformed chip thickness. Option A is 0 at the start of the cut and increases to a maximum value just before the both disengages the workpiece. Option B is increases the maximum value at the center of the travel and decreases towards the end of tooth engagement. Option C is has a maximum value just after the cut is started and drops to 0 at the end of the cut, and D option is remains unchanged. So friends, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा वो अप मिलिंग का क्वेश्चन है, and we know that in case of up milling operation the undeformed chip thickness is 0 at start of operation. That means जब कटिंग स्टार्ट होता है तो उस समय जो होता है वो अनडिफॉर्म्ड चिप थिकनेस क्या होता है, 0 होता है, and increases to a maximum value just before the tooth disengage the workpiece. और वह मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ता है जब तक कि टूथ जो है वो वर्कपीस से डिसएंगेज नहीं हो जाए. टूथ के वर्कपीस के साथ डिसएंगेज होने के पहले तक वो मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करता है. दैट मीन्स मेरा ऑप्शन ए इज 0 एट द स्टार्ट ऑफ द कट एंड इंक्रीजेस टू ए मैक्सिमम वैल्यू जस्ट बिफोर द both disengages the workpiece is the correct answer. So option A is correct answer. Now question 2 is, considering the following statement in respect of grinding. First, the pitch of the grit cutting edges is larger than the pitch of the milling cutter. Option second is, the cutting angles of the grits have a random geometry. Third is, the size of the chip cuts is very small for grinding. So मेरा क्वेश्चन है, which of these statements are correct? First option 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, and D 1, 2 and 3. Friends, in grinding operation there are some specific properties of grit. Grit means the size of the abrasive grains is indicated by grits, या so grit size बोलते हैं हम लोग. And grinding is the true cutting operation and the grain size also indicates the size of the cutting teeth. Means जो है वो grit है वो indicates करता है कि cutting teeth का size क्या है. Now, so in grinding operation there are some specific properties of grit. So the pitch of the grit cutting edge is larger than the pitch of the milling cutter, and it has random geometry, and size of the chip cut is very small for grinding. In option D मेरा है 1, 2 and 3, means 1, 2 and 3 all statements are क्या होगा इसमें, are correct. So option D is correct answer 1, 2 and 3. Now next question है, in helical milling ratio of the circumference of the gear blank to the lead of the helix determines the first, proper speed to use, second, proper feed and depth of cut required, option C is angle setting of the machine table, and option D is gear ratio for table screw and dividing head. So यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि tan अल्फा इक्वल टू होता है इस केस में, हेलिकल मिलिंग के केस में
tan अल्फा इक्वल टू होता है पाई इंटू डायमीटर ऑफ वर्क, पाई इंटू डायमीटर ऑफ वर्क डिवाइडेड लेड ऑफ हेलिक्स, लेड ऑफ हेलिक्स. सो दैट मीन्स tan अल्फा इक्वल टू होता है circumference of the gearbox, circumference of the gearbox to the lead of helix. So option C is the correct answer. ये tan अल्फा यानी अल्फा पे ये डिपेंड करता है, मीन्स एंगल सेटिंग ऑफ द मशीन टेबल, मीन्स ऑप्शन C is correct answer. Now next question is, which one of the following is a single point cutting tool? Option A is hacksaw blade, option B is milling cutter, option C is grinding wheel, and option D is parting tool. So friends, it is very easy question. Hacksaw blade is a single point cutting tool. So option A is correct answer. Now in the selection of optimal cutting conditions, the requirement of surface finish would put a limit on which of the following? First, the maximum speed. Second, the maximum depth of cut. Third, the maximum speed. And fourth, the maximum number of passes. We know that surface finish is only dependent upon feed and nose radius. सरफेस फिनिश जो मेरा है केवल और केवल फीड एंड नोज रेडियस पे डिपेंड करता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, द मैक्सिमम फीड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, अ लार्ज रेक एंगल मीन्स लोअर स्ट्रेंथ ऑफ कटिंग एज. Second, cutting torque decreases with rake angle. Which of these correct? Only one, only two. Option 3 is both 1 and 2, and option 4 is none. So friends, large rake angle decreases the strength of the tool. Large rake angle जो है strength of the tool को decrease करता है. With decrease in rake angle, cutting force increases. जब रेक एंगल को कम करेंगे तो मेरा कटिंग फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगा. दैट्स वाई कटिंग टॉर्क जो होगा वो आल्सो इंक्रीज करेगा. सो ऑप्शन सी बोथ 1 and 2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, गैंग मिलिंग इज ए. ऑप्शन ए, milling process for generating hexagonal surfaces. Option B is process of cutting gears. Option C is process in which 2 or more cutters, and option 2 or more cutters are used simultaneously, and option D is milling operation combined with turning. गैंग मिलिंग में क्या होता है? इन स्ट्रेडल मिलिंग, सबसे पहले जानते हैं स्ट्रेडल मिलिंग में क्या होता है. स्ट्रेडल मिलिंग में 2 साइड्स मिलिंग कटर आर माउंटेड विथ ए डिजायर्ड डिस्टेंस बिटवीन देम सो दैट बोथ साइड ऑफ ए वर्क पीस कैन बी माइल्ड साइमल्टेनियसली. कहने का मतलब है अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं, स्ट्रेडल जो मेरा मिलिंग होता है वो इस तरह से होगा. इसमें ये यहां से मीन्स ये जो मेरा होगा ये अर्बर होगा. ये क्या है? मेरा अर्बर है, ARBOR अर्बर. सो इन स्ट्रेडल मिलिंग 2 sides milling cutters are mounted with a desired distance between them so that both sides of a workpiece can be milled simultaneously. So but in gang milling, which involves the use of combination of more than 2 cutters mounted on a common arbor. So option C
Process in which two or more cutters are used simultaneously is correct answer. So option C is correct answer. So friends, आज जो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. इस तरह के क्वेश्चंस ऑलवेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, फॉर एग्जांपल IAS, JEE एंड असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन वगैरह में ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें. थैंक